हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ये एटीकेटी का पेपर था जो अप्रैल 2023 का। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारा यूनिट 1 से है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज प्रोजेक्ट एंड एक्सप्लेन द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट। So what is a project? It is a specific plan or design or a planned undertaking or a large undertaking or a public work. So basically क्या है, हमारे पास दो टाइप के काम होते हैं। जैसे कि हम जो रेगुलर वर्क करते हैं वो हो गया हमारा जॉब, बट उसके अलावा कभी हम कोई एक प्रोजेक्ट लेते हैं या फिर कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से हम कोई काम करते हैं तो वो हो गया हमारा प्रोजेक्ट। जैसे अगर हमें क्लैश डिटेक्शन या क्रैश डिटेक्शन सिस्टम बनाना है, जैसे कि ट्रेन्स में अगर एक्सीडेंट होता है तो हमें फाइंड आउट करना है एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस इफ टू ट्रेन्स आर हेडिंग ईच अदर, तो हमें उसके लिए कवच का सिस्टम बनाना है। तो दैट इज माय प्रोजेक्ट। सो प्रोजेक्ट क्या है, यहाँ पर हर एक प्रोजेक्ट की there should be a specific objective, then we should have the steps of how to complete that particular objective. तो यहाँ पे यूजुअली क्या होता है कि मल्टीपल टास्क इसमें हम यूज करते हैं। वी हैव द प्री डिफाइंड प्रेसिडेंस रिलेशनशिप एंड वी हैव द स्पेसिफिक टाइम ऑफ कंप्लीशन। ये तो हो गया प्रोजेक्ट का डेफिनेशन। इसके बाद आता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं। दीज 8 पॉइंट्स। 1 इज द नॉन रूटीन वर्क, मतलब ये प्रोजेक्ट एक रूटीन वर्क नहीं है, ये एक डिफरेंट वर्क है। मतलब हमें कोई नई चीज बनानी है, क्लैश डिटेक्शन सिस्टम बनाना है या फिर हमें कोई ड्रोन बनाना है या फिर हमें कोई मेडिसिन डिलीवरी के लिए कोई रोबोट बनाना है। तो दैट इज माय प्रोजेक्ट। सो इट्स नॉट अ रूटीन वर्क, इट्स अ प्लान्ड एक्टिविटी and it is aiming at a specific target. It is carried out for the customers. It is carried out by a specific work group and involves specialism made up of several phases constrained by time and resources, and it may be large or complex. So this completes our first question. अब जाते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड सब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, object are basically defined by completing the statement that the project is regarded as a success if, मतलब अगर मैंने कॉलेज के लिए एक वेबसाइट बनाया, so what is the success statement for that website? I have to write, so I can write like कि my project is considered as a success if I get 10,000 hits on my project in 1 month. So this is a particular objective statement. Why? Because this shows how I will consider my project as successful. Second, it should be able to solve the user queries. And third, I'm specifying the time. मतलब मैंने लिखा है 1 month, within 1 month. So I have specified the time at which I want to achieve that objective. So all these needs to be written properly. मतलब हमें time constraint भी लेना है. So our objective should be smart. Smart का मतलब है स्मार्ट, मतलब स्पेसिफिक। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए, रिलेटेड टू ओनली आवर प्रोजेक्ट। इट हैज टू बी मेजरेबल, मतलब अगर मैंने लिखा 10,000 हिट्स तो हम मेजर कर सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट को 10,000 हिट्स मिले कि नहीं, तो वो हो गया हमारा मेजरेबल। फिर आता है अचीवेबल, मतलब वो जो टारगेट हमने लिखा है वो अचीव करना भी आना चाहिए हमें, हमारे लिए वो अचीवेबल होना चाहिए। फिर आता है रेलिवेंट, मतलब वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी होना चाहिए, जैसे हिट्स टू द वेबसाइट, इट इज अ रेलिवेंट ऑब्जेक्टिव। एंड देन आई हैव रिटन within 1 month, so it should be time bound. So the objective has to be smart, that means it has to have all these 5 properties. Then comes the goals and sub objective. So if you want to achieve a certain objective, it is not possible to achieve it at once. हमें क्या करना है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। then each will become a particular goal. like हम लिखते हैं कि for each person we can give a specific goal or sub objective. जैसे हम हर एक प्रोग्रामर को एक सब ऑब्जेक्टिव दे सकते हैं कि आपके कोड में मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। एनालिस्ट को दे सकते हैं कि उनका एनालिसिस एकदम परफेक्ट होना चाहिए। सो इन दिस वे वी कैन गेट द ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीटेड बाय कन्वर्टिंग इट इनटू गोल्स। तो ये देखिए, एनालिस्ट का गोल हो गया एक्यूरेट रिक्वायरमेंट, डेवलपर का गोल हो गया रिलायबल सॉफ्टवेयर। सो इन दिस वे वी कैन डिवाइड इट इनटू गोल्स।
and we can achieve. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन द वेरियस बिडिंग टेक्निक्स along with their application and applicability. तो बिडिंग टेक्निक्स क्या है? ये अगर हम प्रोजेक्ट को बिड करना चाहते हैं, सो वी हैव टू हैव अ चेकलिस्ट. सो पहले क्या करना है? यूज द चेकलिस्ट टू इंश्योर ऑल इम्पोर्टेंट items are included in the bid. Second, carefully review the plan, check take off and measurement to improve the accuracy. Then attend a pre-bid meeting or site visit. मतलब हम प्रोजेक्ट के लिए साइट विजिट कर सकते हैं या फिर जो प्री बिडिंग का जो मीटिंग होता है वो हम अटेंड करेंगे. नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी. वी हैव टू चेक एंड ट्राई टू इम्प्रूव द टेक्नोलॉजी. Then comes the subcontractor. So review past performance, bid details, pricing, labor cost and practices that we have to check. And we have to check the financial cost. Then we have to bid the right project and it should have the expiration date. So these are some of the features of bidding. नेक्स्ट क्या आता है? एक्सप्लेन द वेरियस सेक्शंस कंटेनिंग टिपिकल बिजनेस केस डॉक्यूमेंट. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज बहुत ही नोन क्वेश्चन है. यहाँ पे क्या है हमारे पास? कंटेंट्स ऑफ अ बिजनेस केस है. तो पहला आता है इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड. तो ये जो 10 पॉइंट्स है इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो कि व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द प्रोजेक्ट, देन व्हाट इज द प्रपोज्ड plan or the proposal for the new project, then currently which projects are there in the market that we can study. Then we can study the organizational and operational infrastructure. Then we can go for benefits. Then we can outline the implementation plan, what is the cost, what is the financial plan, what kind of risk is involved, and what is the management plan. So everything is explained here. Now next question पे आते हैं. Next question is, suppose a software development company has undertaken a project that is expected to be at the cost of 1,60,000 to execute and expected inflow is 25,000 per quarter. मतलब एक महीने में 3 months में आता है 25,000. तो एक साल का इनकम हो जाएगा 1 lakh now for the first year and 30,000 per quarter thereafter. उसके बाद हमारा कितना आया? 30,000 per quarter. मतलब पहले हमने ये प्रोजेक्ट में हमने कैसे इनकम किया? पहले 25,000, फिर 25,000, उसके बाद आया 25,000, फिर से 25,000, उसके बाद आया हमारा 30,000, वापस हमारा आया 30,000. So in 1.5 years, 1.5 year, we have get back our money. So it is asking what is the payback period. मतलब ये टोटल हमारा आ गया 1,60,000. तो हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था 1,60,000 वो हमें 1.5 years में रिटर्न आ गया. So our payback period is 1.5 years. Now explain in detail step number 5 of stepwise framework. So stepwise framework का step number 5 है estimate effort for each activity. So what is the effort required for each activity? We have to count that we have to use the POCOM model staff per hour, then elapsed time for each project. So this explanation is there. Then we have to carry the bottom up estimate and revise the plan and create collaboration of activities. So with this, we have completed question number 2. Thank you.